गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट्स। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। इट्स 7:30, सो लेट अस स्टार्ट आवर इवनिंग सेशन। सौरभ झा, गुड इवनिंग। Ritik Sharma, good evening. Good evening to all of you, dear aspirants. So here is the question number one of the day, MCQ. Which among the following is are prominent invasive species in India? Uh, the question relates to invasive species in India. INVASIVE, invasive species, you all know. Uh, Number one, Cassia uniflora. Number two, Chromolena odorata, ODORATA. The third, Lantana camara. Fourth, Acacia catechu, KATECHU. And fifth, Prosopis juliflora. Prosopis juliflora, PROSOPIS JULIFLORA. So these are the five species, and you have to find out prominent invasive species. So select your answer from the options given below: 1, 2, 4, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. And here I am going to uh, name the answer. Okay, so the answer is 1, 2, 3, 5. That is C. For Acacia catechu, this is not the correct, okay, answer. So we have to eliminate it. And some of the most serious invasive in India are Altanthera. You will find the list while you will Google it. Komal Singh is telling good evening. Parasuram Kumar is also coming. So both of you, good evening. Very good evening. So, dear aspirants, for your knowledge sake and for your further preparation of notes, prominent invasive species in India: Cassia uniflora, then Chromolena odorata, Lantana camara, Acacia catechu. This is, we have to eliminate it. And then after Prosopis juliflora. So you might have written it. The next question of the day is: India has signed reciprocal exchange of logistics, RELOS, reciprocal exchange of logistics agreement with which country? So this is the question. A, Japan; B, USA; C, Russia; and D, China. So dear aspirants, what should be the answer? Do you know? Okay. So India has signed reciprocal exchange of logistics, and you have to name the country: A, Japan; B, USA; C, Russia; and D, China. So what should be the answer? Dear aspirants, the answer is Satish Kumar is telling good evening. Yes, Satish, are you from Deoghar or from some other place? So very good evening to you. So every day on at Saurabh Jha, USA. No, it's Rasa. Rasa. Ajay Kumar, good evening. Yes, Ajay, very good evening to you. So Rasa is the answer. So India has signed reciprocal exchange of logistics agreement with Rasa. It's not USA. So India is all set to conclude the bilateral logistic agreement with Russia. Reciprocal exchange of logistics agreement. Reciprocal exchange of logistic agreement will provide India to access to Russian facilities in the Arctic region, which is seeing increased global activity as new shipping routes open up and India's own investment in the Russian Far East. Sati, I am from Devghar. Great. Wonderful to see you here, Satish. Welcome. So India has signed several logistic agreements with all Quad countries: France, Singapore, and South Korea, beginning with logistic exchange memorandum of agreement LEMOA, LEMOA, with the US in 2016. So recently, so in this question, the word India has signed, okay, reciprocal exchange agreement with which country? So the answer is Russia. The answer is Russia. Now, Wali Musa dialogue was recently seen in the news. Recently, it was very much in the news. That is the Hindu, VALLI, VALLI.
Musa, Moosa, dialogue, Dialogue, was recently seen in the news, and it relates to what we have got options, four options, A, B, C, D. So option A UNFCC based high level dialogue regarding clean development of mechanism. Now B, a EU Commission, okay, European Union Commission based high level dialogue to report on Ukrainian crisis. C, a BRICS member based high level dialogue regarding gender and financial inclusion. And D is नमस्ते और गुड्डन कुमार जी भी आ गए। शुभ संध्या श्रीमान करबद्ध आपको प्रणाम। बहुत अच्छी कविता हो गई। तो बड़ी अच्छी कविता आपने कर दिया गुड्डन कुमार जी। एंड अभिषेक चक्रवर्ती इज कमिंग एंड टेलिंग यूएनएफसी एंड यू आर करेक्ट। तो मैं गुड्डन जी की कविता पे बोल रहा था। शुभ संध्या श्रीमान करबद्ध आपको प्रणाम। तो एक कविता याद आ गई हमको भी, तो सुन लीजिए। तो आधुनिक युग, आजकल का जो समय है, आधुनिक युग कलयुग नहीं, क्यों युग। जहां भी जाइए लाइन में आइए, जहां भी जाइए लाइन में आइए। एक दिन किसी बात पर, दिली जज्बात पर पत्नी से हो गया झगड़ा, मामूली नहीं तगड़ा, आत्महत्या करने को चले, कुतुब मीनार से गिरकर मर गए, 156 सीढ़ियां चढ़े, मरने को पैर आगे बढ़ाया था, सिर को झुकाया था कि पीछे से आवाज आई, पीछे से आवाज आई, पहले मेरा नंबर है। 14 नवंबर से खड़ा हूं, आज आज 25 दिसंबर है। कलयुग नहीं क्यों युग, जहां भी जाइए लाइन में आइए। तो ये भी एक कविता हो गई। गुड्डन कुमार जी आपने प्रेरित किया, तो चार पंक्तियां हम तो सब कुछ था। और आज क्या है, कप टी ही। ये है आजकल की कविता। तो आइए देखें, अभिषेक चक्रवर्ती यूएनएफसी और सौरभ झा यूएनएफसीसी। इट इज नॉट ओनली एफसी, ओके, यू शुड यूज ट्रिपल सी, ओके, triple C, UNFCCC. So this is the correct answer. So very nice. Now let us move to the next question. Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? Inflationary, dear aspirants, almost all questions which I have taken today, these are there. You will find in PYQs, previous year's question. So repayment of public debt, DEBT. B, borrowing from the public to finance a budget deficit. C, borrowing from banks to finance a budget deficit. And D, creating. Now, please listen once more so that you should conceptualize. Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट किसका है? ओके, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, बोरोविंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, बोरोविंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, और क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट deficit. So, dear aspirants, the answer to this MCQ is D. Okay, creating new money to finance a budget deficit. So, this is the correct answer to this question. Now, the next question relates to artificial intelligence, and this is the most favorite area nowadays from which UPSC may ask, okay, during your upcoming prelims examination. So consider the following statement about artificial intelligence, AI, artificial intelligence, and we have only two statements. Number one, artificial intelligence is an emerging technology that facilitates intelligence and human capabilities of sense, comprehend, and act of use of machines. Second, raise 2020 responsible AI for social
Empowerment 2020 was jointly organized by Niti Aayog and the Ministry of Electronics and Information Technology, that is MITI. So, which of the statement given above is are correct? A, one only, B, two only, C, both one and two, and D, none of these. So, dear aspirants, you have to find out the correct answer. What should be the answer? And here in this MCQ, the answer is C. The answer is C. Artificial intelligence is an emerging technology. Both the statements are correct. Okay. Artificial intelligence is an emerging technology that comprehend and act with use of machines. So C is the correct answer. Ritik Sharma, Rage, Niti Aayog, and Ministry of Electronics and Information Technology. So both the statements are correct. Yes, Saurabh Jha, good answer. Now, which of the following organization established the Technology Development Fund? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? You have to answer it. A, Ministry of Micro. And the third statement, it is headquartered in Mumbai. Headquartered in Mumbai. So you have to select the correct answer given below. A, 1 2 only, B, 2 3 only, C, 1 3 only, and D, 1 2 3. Now, dear aspirants, the second statement is not correct. It was established and incorporated in 1992. So we have to eliminate it, and our answer should be C, that is 1 and 3 only. 1 and 3 only. So, dear aspirants, now the next question is, which of the following countries is not part of RCEP? Australia, Cambodia, Bangladesh, and New Zealand. So, the Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, the full form is Economic Partnership. RCEP, the full form is Regional Regional Comprehensive Economic Partnership. So this is a free trade agreement among Asia Pacific nations of Australia, Brunei. So this is a free trade agreement among Asia Pacific nations of Australia, Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Japan, South Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, New Zealand, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. So it's a very, very important, dear aspirants. If you okay, frequently buffering. So you are telling that it's buffering, but at my end, it's not buffering. So let me. I think now it is good. Okay. So no question of buffering. Please. Okay. So I was discussing Regional Comprehensive Economic Partnership, that is RCEP. That is RCEP. So, dear aspirants, it's now let us see the next important question, and this is also very, very important with respect to your upcoming prelims examination. Okay. So now onwards, we have consider the doctrine of three bodies of Mahayana Buddhism and select the correct match from the following. So, number one, body of essence, Dharmakaya. Body of essence, Dharmakaya. Two, body of bliss, Maha Manavakaya. Body of bliss, Manavakaya. Then body of magic transformation, Nirmanakaya. Nirmanakaya. So consider the doctrine of three bodies of Mahayana Buddhism. So this way, these are the three bodies of Mahayana Buddhism, and you have to select the correct match. So body of essence, Dharmakaya, body of bliss, Manavakaya, and body of magic transformation, Nirman Kaya. So A is 1 2, B is 1 3, C is 2 3, and D is all. So what should be the answer? Dear aspirants, the answer is B, 1 and 3.
So, so body of essence, dharmakaya, this is correct. Then body of bliss, manav kaya, this is not correct. And body of magic transformation, nirman kaya, this is correct. So our answer should be 1 and 3. So this is also worth to note in your notebook. CTFS, consider the following pillars of Buddha's teachings and select the correct match from the following: Buddha, enlightenment; Dhamma, order; and Sangha, teachings. So this is the matching. Okay. So Buddha, enlightenment; Dhamma, order; Sangha, teachings. So A, 1 only; B, 1 2; C, 2; and D, 2 3. So dear aspirants, what should be the answer? Are you able to answer it? Consider the following pillars of Buddha's teachings and select the correct match from the following. तो आप अगर अच्छे से देख पा रहे हैं, इज इट ओके? इज इट ओके नाउ? यस, प्लीज रिस्पॉन्ड. अभी ठीक है? Because from my side it's quite okay, there is no buffering. So Somujha is telling 1. So Buddha, enlightenment, this is correct and wonderful. This is the correct answer. Somujha, Ritik, please repeat. Okay. So matching का था इसमें बुद्ध, enlightenment, Dhamma, order, and Sangha, teachings. So only 1 is correct. Somujha, wonderful, good answer. So now the next question. Consider the following events from the life of Buddha and select the correct match from the following. So, life of Buddha, and you have to select the correct match from the following. Number 1, Mahaparinirvan. Mahaparinirvan related to enlightenment. Then second, Nirvan related to death of Buddha. Then third, Mahabhiniskraman, the great renunciation. Renunciation. Please note it down. Mahabhiniskraman, great renunciation. So A, 1 only; B, 2 3; C, 3 only; and D, 1 2. So what should be the answer, dear aspirants? CTFS, consider the following events from life of Buddha and select the correct match from the following. So once again, matching question. Mahaparinirvan related to enlightenment. Ritik Sharma is telling 2 and 3. So B is the answer. Okay, this is the call given by B. Nirvana related to death of Buddha. How can you say? So 2 is not correct. Only 3 is correct. Okay, Ajay Kumar is telling 4, but here there is no 4. D. Okay, A, B, C, D. So only 3 is correct. Mahabhiniskraman, the great renunciation. Okay. Mahaparinirvan, this is related to enlightenment. Mahaparinirvan. Then Nirvan related to death of Buddha, and Mahabhiniskraman, the great renunciation. Yes, wonderful, great. Now the next question correctly defines the term Angdias, Angadias, that was recently seen in the news. Anga, Anga Dias, Angadias. So what does it stand for? A, peoples of Northeast India who perform a special kind of ritual to protect their habitat. B, community that are involved in the business to transfer cash from one estate to another. C, peoples who perform in the game of bull taming in southern India, Jallikattu, you may say. And D is none. So, what should be the answer to this question?
Angadias, all capital, Angadias. So if you know the answer, okay, wonderful. B is the correct answer. Abhishek Chakravarti, great, great, great. Community that are involved in the business to transfer cash from one state to other. तो इसी को अंगाडियास कहा जाता है और ये हाल में समाचारों में था। प्रिय अभ्यर्थीगण, इसे आप नोट कर लें, ANGADIAS, अंगा डियास। और यूपीएससी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो समाचारों में समसामयिक रूप से प्रकाशित होते हैं और उसी को विभिन्न आयामों से देखकर, बिकॉज आपके सिलेबस का पहली पंक्ति क्या है, ओके, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इवेंट्स, तो उसके तहत ये सारे प्रश्न चले आते हैं। सो अभिषेक चक्रवर्ती करेक्टली आंसर्ड, दिस इज द आंसर, कम्युनिटी दैट आर इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस टू ट्रांसफर कैश फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सो डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज द करेक्ट match. Okay, now you have to find out the incorrect matching. Kuki, Manipur. So is it the tribe from Manipur? Kuki, Kuki dash Manipur. Then Vanniyars, 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 Tamil Nadu. And Miti, Manipur, Miti, MEITEI, Miti, Manipur. And D is none. So you have to find out the incorrect match out of the following. Dear aspirants, all are correct. So the answer is D, none. So all are correct. Kuki is a tribe from Manipur. Vanniyars is a tribe from Tamil Nadu. And Miti is also a tribe from Manipur. So all are correct. None is incorrect. Dear aspirants, now this question is very, very important. Please concentrate and write in your notebook. CTFS regarding non-fungible tokens, NFT, okay, non-fungible, FUNGIBLE, fungible tokens, TOKENS. You have to find out the incorrect statement about NFT, that non-fungible. Statement A is an NFT is a unique, okay, irreplaceable token that can be used to prove ownership of digital assets. Try to concentrate. Satish Kumar is telling D. Then B is anything that can be converted into a digital form can be an NFT. C is NFT transactions are on blockchains, which is a digital public ledger. And D, the value of one NFT is equal to another. So what should be the incorrect statement in this MCQ? Dear aspirants, all the three statements A, B, C are correct. The incorrect statement is D, and Satish Kumar is okay answering it correctly. The value of one NFT is equal to another. But I am surprised. I have not completed the question and इनका उत्तर आ गया. ये कैसे हुआ? So an NFT is a unique, okay. D Abhishek Chaudhary, D is incorrect. Yes, wonderful. So all the three above statements, that is A, B, C, are correct regarding NFT. Somujha is also answering D. So this is the correct answer, dear aspirants. So now we should take up some more questions, and I think I have some more questions prepared for you. Okay, you all know about summer. So summer is a scheme from our state of Jharkhand. SAMAR, SAAMAR, please note it down, to tackle malnutrition in our state of Jharkhand. So this is a scheme being launched by the government of Jharkhand.
SAMAR, SAAMAR. You should know it because this is very, very important. Launched by the government of Jharkhand. Okay, so we should take a note of it. This is very, very important. And in this way, okay, yes. So please concentrate once again, dear aspirants. Which of the following is are the characteristics of oligotrophic lake? Now, this is a question from geography segment. Okay, you please note it down. Oligotrophic, O-L-I, okay, G-O-T-R-O-P-I-C, oligotrophic, O-L-I-G-O-T-R-O-P-I-C, oligotrophic lake, L-A-K-E. Number one, high primary productivity. Two, clear water. And three, oxygen deficient water. So you have to select the correct answer using the code given below. A1 only, B2 only, C2 3, and D1 3. So please listen once again. Which of the following is are characteristics विशेषता of oligotrophic lake? तो इसकी क्या विशेषता है? हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकंड क्लियर वाटर, और ऑक्सीजन डेफिशिएंट वाटर. So what should be the answer to this MCQ, dear aspirants? Lakes usually have quite clear water due to the limited growth of algae in the answer should be B, that is only. Okay, B, that is 2 only. So clear water, this should be the answer. High primary productivity, no. Low productivity, so A is not correct, Somujha. The answer is B, 2 only. And oxygen deficient water, this is also not correct. So oligotrophic lakes have following characteristics. Okay, net primary production is only between 50 to 100 milligrams of carbon per square per day. So very low. Nutrients are in poor supply. So this is the explanation. Okay. Now let us discuss the next question. CTFS considered the following statement regarding National Company Law Appellate Tribunal, that is NCLAT. NCLAT. So it was constituted under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code 2016. डियर एस्पिरेंट्स, पहली बार सुनने में आपको लगेगा कि ये क्या, तो ये यूपीएससी का टिपिकल स्टाइल है क्वेश्चंस का. और ये एपेलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज एनसीएलए, या फिर आप कहें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इससे कई बार इन्होंने सवाल पूछे हैं, तो इसलिए ये आपके समक्ष है. सेकेंड स्टेटमेंट, इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय the Competition Commission of India, that is CCI. So which of the statement given above is are correct? So the second statement is correct. It can hear appeals against any order passed by the Competition Commission of India, that is CCI. CCI. So National Company Law Appellate Tribunal, NCLAT. Okay. So was constituted under section 410 of the Companies Act 2013 for hearing appeals against the orders of National Company Law Tribunal, NCLT. Hence statement 1 is not correct. So this is the full explanation, dear aspirants, and you should write it in your notebook. Let us come to understand this very question. In the context of medieval India, which of the following officers used to be in charge of इक्ताज? इक्ता. तो यदि आपने दिल्ली सल्तनत को पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, और यदि आपने दिल्ली सल्तनत का स्पर्श भी नहीं किया है तो ये क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाएंगे. ए मुक्ति, बी कानून गो, सी आमिल, एंड डी मुकद्दम. आपको बताना है
कि इनमें से ये सारे के सारे ऑफिसर हैं, ये सारे के सारे ऑफिसर हैं, तो इनका नाम क्या है? मुक्ति, कानूनगो, आमिल, मुकद्दम। अब कानूनगो तो अभी भी है, कानूनगो तो अभी भी है रेवेन्यू ऑफिसेज में। कानूनगो जो आप देखते होंगे, लैंड एक्विजिशन, जो भूमि अधिग्रहण किया जाता है, लैंड एक्विजिशन, तो वहां कानूनगो का पद होता है। सो आपने बताना है कि इनमें से इक्ता का प्रभारी, इक्ता के चार्ज में कौन था इनमें से? So, dear aspirants, the right answer is A, that is Mukti. So, Mukti was in charge of Iktaj. Mukti was in charge of Iktaj. तो आगे चलते हैं. Which of the following statement? Yes, Ispriha ji, good evening. So, very, very welcome. तो काफी अच्छा लगा, और आज के क्लास में आप नहीं थी। हम लोगों ने लगभग 10 बहुत इंपॉर्टेंट GS2 दैट इज सी सेट में हम लोगों ने बनाया है। तो काफी हम लोगों ने मिस किया, और बहुत अच्छा क्लास रहा। बहुत सारे बच्चे आए, और वी वेर मिसिंग यू। और सभी लोगों ने एक स्वर से स्पृहा दी। तो हमने इन लोगों को बताया था कि सी हैज प्रॉमिस्ड मी टू कम, बट हम लोग काफी इंतजार, और आज का क्लास भी काफी देर तक चला। हम समझते हैं कि 1:30 बजे हम लोगों ने क्लास को छोड़ा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता, चूंकि सी सैट GS1 में तो आप निकाल लेती हैं, बट सी सैट एक राह में रोड़ा बनता है। तो इस बार हमने सोचा है कि सी सेट को बिल्कुल ही हम लोग चुस्त दुरुस्त करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब उस पर पकड़ आ गई है। और जो पैसेज भी है, पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस भी, वो बहुत आसान है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑफ मॉडरेट नेचर है, उनको भी हल किया जा सकता है। और जो मेंटल एबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, डेटा एक्सप्रेशन है, तो डायग्राम उसमें भी कहीं कोई दिक्कत अब नहीं है। काफी अच्छे से प्रैक्टिस चल रही है। तो अब देखें, आप अपनी सुविधा के अनुसार क्लास ज्वाइन करेंगे। सो थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, मुक्ति। अब आइए देखते हैं हम यहाँ पे, ये है, which of the following statement is not correct with regard to the provisions of PESA, PESA। तो एक्ट से संबंधित भी क्वेश्चन आता है। उनका फेवरेट है ईसी एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, देन PR एक्ट, दैट इज पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, ये सब उनका फेवरेट है। पेशा भी है, और प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट ऑफ 1996। डियर एस्पिरेंट्स, we have ABCD type of statement. A, every village shall have a gram sabha consisting of persons whose names are included in the electoral rolls. And today, while okay, just going through the answer copy of some of you, I discussed the importance of gram sabha during our offline class. And here is the question related to Gram Sabha. Statement A, every village shall have Gram Sabha consisting of person whose names are included in the electoral rolls for the panchayat at the village level in the scheduled areas. अब आपको बताना है कि नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। Now B, the reservation for scheduled tribes shall not be less than 1/3 of the total number of seats. This statement is not correct. Now C, the state legislature shall try to follow the pattern of 6th schedule to the constitution while designing the administrative arrangements in the panchayat at district level in the scheduled areas. So what is the name of that very institution? At district level it is Jila Parishad. Jila Parishad. Now statement D, the panchayats at the lower level of the Gram Sabha should be provided with safeguards against the higher level of assuming the powers and authority. So this statement is also correct. Now, dear aspirants, we should move to some other questions. And here, okay,
we find some more interesting question, and this is genome editing. So this is the most important area. Okay, from here you may find a question in UPSC exam. Dear aspirants, genome editing is somatic in somatic cells has always been in the news. Probably the best known example of somatic cell, somatic cell genome editing is the sickle cell disease. Sickle, sickle, sickle cell disease. In this context, which of the following is are somatic cells? अब एक बार आप अगर पीवाई क्यू पे ध्यान देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्टेम सेल पे सवाल पूछा है कई बार, दो तीन बार। अब अभी क्या आ गया? सोमेटिक सेल। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा डियर एस्पिरेंट्स, इस पे आपको ध्यान देना होगा। नंबर वन, ओवा और एग्स। नंबर टू, रेड ब्लड सेल्स। नंबर थ्री, न्यूरॉन्स। एंड नंबर फोर, टेस्टिकुलर sertoli and Leydig cells. So select the correct answer using the code given below: A 234, B 1, C 13, and D 123. So what should be the answer? If you know, please tell. So the answer to this question is 234, that is red blood cells, neurons, and testicular sertoli. Ova and X is not okay the correct answer. So genome editing can be performed in germline cells, that is sperm, eggs, and embryos, to induce heritable genetic changes, or in somatic cells, also called non-productive cells, other cells to induce non-heritable changes. So dear aspirants, somatic cells you should learn, and this is very important. Okay, now, in which of the following regions of India are you most likely to come across the flame-throated bulbul? Flame, Flame, flame-throated. C, salt marshes of western Gujarat, the western घाट। तो ये चार क्षेत्र हैं और आपको बताना है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल कहां उनका नेचुरल हैबिटेट है। So where is the natural habitat of flame-throated bulbul? So Ispriyaji is here. So she may be able to answer because he is very much expert in environment. Okay, environment segment. So are you able to answer this question? Please. So the answer is D, Western Ghat. Okay, the flame-throated bulbul is a member of bulbul family of passerine birds. Passerine, sir, please repeat. Okay, so yes, in which of the following regions of India are you most likely to come across the flame-throated bulbul in its natural habitat? This is the question. And options are A, tropical rainforest, B, sand deserts, C, salt marshes, and D, western ghat. So the answer is D, western घाट। वेस्टर्न घाट में हम पाते हैं फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। ओके, सो वेस्टर्न घाट इज द करेक्ट आंसर, सोमुझा। वंडरफुल। सो yes is Priyaji, correct, wonderful. So now Parasuram Kumar, yes Parasuram Kumar ji, very good answer. So now a question related to taxation. CTFS, consider the following statement regarding taxation in India. So number one, tax is a compulsory exaction of money by a public authority for public purposes enforceable by law. Second,
there exists an element of quid pro quo between the taxpayer and the public authority. So, which of the statement given above is are correct? A, one only, B, two only, C, both one, two, and D, neither one nor two. So, dear aspirants, in this MCQ, only first statement is correct. The second statement is not correct. So, why do I say like this? Because there exists an element of quid pro quo. This is not correct. So, tax is a compulsory exaction of money by a public authority. This is the correct explanation. This is the correct status, I think. So, dear aspirants, now which of the following sculptures are commonly found in Dravida style temples? So, art and culture is the favorite area from which you may find a question. Yes, Isprihaji. Good. So, number one, river goddesses, two, Dwarpalas, three, Nandi, and four, Mithunas. So, select the correct answer given the code below. So, what are the commonly found द्रविड़ स्टाइल टेम्पल्स? कॉमनली फाउंड जो दक्षिण भारत में द्रविड़ स्टाइल टेम्पल है वहां पे सामान्यतया क्या पाया जाता है मुख्यतः? तो ऑप्शन क्या है? नंबर वन, रिवर गॉडेसेज, नदियों की देवियां, टू, द्वारपालाज, थ्री, नंदी, और फोर, मिथुना. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है. A 1 2 3, B 2 3, C 1 4, and D 3 4 only. Dear aspirants, the answer is 2 3 only. B, that is Dwarpala and Nandi. Yes, Ritik, wonderful, great. So द्वारपाल और नंदी द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल में है. वन, रिवर गॉडेस, नदियों की देवियां, तो ये तो टेम्पल में नहीं दिखाई पड़ती हैं. ये पर वो सारे के सारे जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है. तो इस तरह से अब एक क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ही अच्छा, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है सीटीएफएस, और उसमें एक स्टेटमेंट रहता है, तथ्य रहता है. वो क्या? लोकेटेड एमिडस्ट में इट इज बोथ ए टाइगर रिजर्व एज वेल एज एन एलिफेंट रिजर्व. ये टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है, टुगेदर विथ मुडुमलई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, एंड नागरहोल नेशनल पार्क. तो ये तीनों वहां पर एग्जिस्टेंस है. और अभी चूंकि पुष्पराज जो फिल्म है वो आई है, तो निश्चित रूप से उसको टारगेट करेगा, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी पर, उसी थीम पर वो फिल्म बनी है और काफी उसको पब्लिसिटी मिली है, लोग उसके प्रति काफी आकृष्ट हैं. तो उस संदर्भ में ये प्रश्न, लोकेटेड एमिडस्ट वेस्टर्न घाट माउंटेन्स, इट इज बोथ ए टाइगर रिजर्व एज वेल एज एन एलिफेंट रिजर्व, टुगेदर विथ मुडुमलई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, एंड नागरहोल नेशनल पार्क. It creates the India's biggest biosphere reserve, the Nilgiri Biosphere Reserve. So which of the following national park is best described? अब आपको बताना है कि नेशनल पार्क कौन सा है. ए, कुंडरमुख नेशनल पार्क, बी, बानरघाटा नेशनल पार्क, सी, बांदीपुर नेशनल पार्क, एंड डी, अंसी नेशनल पार्क. सो डियर एस्पिरेंट्स, ये 4 नेशनल पार्क का नाम हुआ. इनमें से कोई एक सही है. आर यू एबल टू आंसर इट? सो ऋतिक इज टेलिंग C, and C is the correct answer. Wonderful, Hrithik. Somu Jha, good, very good, very good. Amit, Bandipur, yes, Amit, you are correct. So all are correct. So it's very nice. आपने पकड़ लिया. ये इस तरह से अगर आप पकड़ेंगे, परशुराम इज ऑल्सो गुड, वेरी गुड. तो इस तरह से यदि आप पकड़ते हैं तो यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन. अब एक और, यस इस्प्रिया जी, गुड, वेरी गुड. कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. लार्जर पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैज दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट.
हमारे देश में इसी प्रकार का फॉरेस्ट है। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, दे सेट देयर लीव्स एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, और वो अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं, मतलब पतझड़ होता है किसी एक वर्ष के किसी पर्टिकुलर समय में। थर्ड, ट्रीज लाइक सॉल, टीक, सीसम, नीम आर प्रोमिनेंट। तो इनमें से मुख्य जो है वो साल है, टीक है, सीसम है। ड्राई डेसिडुअस, यस अमित, वेरी गुड। सो चूज द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन विच एग्जिबिट्स द अबव मेंशन्ड, करेक्ट। तो ये ऊपर जो बताया गया उसमें कौन इसमें सूट करता है? ए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी, थॉर्नी फॉरेस्ट, सी, ट्रॉपिकल deciduous forest, and it's D, mangrove forest. So the answer है tropical, और ने भी बता दिया dry deciduous. So everybody, ऋतिक शर्मा, सोमू झा, परशुराम कुमार, everybody is correct. ये आपने आंसर दिया तो ये बहुत अच्छा लगा। तो अब यहाँ पे देखें, CTFS रिगार्डिंग द क्लाइमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ पीपुल इन लद्दाख, ए कोल्ड डेजर्ट। तो भारत में कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख में। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और दो स्टेटमेंट सुनिए, दे एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। सेकेंड, द पीपुल कैन फील द हीट ऑफ द सन intensely as the air is, okay, as the air is so thin. Choose the incorrect statement. अब इसमें आपको इनकरेक्ट चुनना है। A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and D, neither 1 nor 2. अब बताइए इसमें क्या आंसर होगा प्रिय अभ्यर्थीगण? तो एक तो बात है कि कई बार बफरिंग होता है, लेकिन आप रुकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं। और स्प्रिया जी इज टेलिंग एक्सपीरियंस ऑफ द सन इंटेंसली एज द एयर इज सो थिन। तो ऋतिक शर्मा, यू आर करेक्ट, वेरी नाइस। तो इसमें आपको ये ध्यान देना होगा। और ऋतिक का ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो ये ज्योग्राफी में काफी अच्छी इनकी तैयारी है। तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दी 30 मिनट्स डियर एस्पिरेंट्स। टुमारो इज संडे, और इसके बावजूद भी हम कल निश्चित रूप से आएंगे 7:30 बजे। शर्त एक है, अभी हम एक ऐसे का टॉपिक भेजेंगे, प्लीज राइट, आपको लिखना है। ओके, द ऐसे टॉपिक हैज टू बी रिटन, और कल उसको इवनिंग के पहले आप पोस्ट करेंगे व्हाट्सएप में मेरे नंबर में, और शाम में एसे राइटिंग का एक सेशन होगा। आंसर राइटिंग एंड एसे राइटिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन में भी बहुत 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 आपको मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड रहेंगे, उसमें और भी अभी काम बाकी है। प्रिय अभ्यर्थीगण, आप निश्चित रूप से ऐसे लिखेंगे, और ऐसे लिख करके आप उसमें डालेंगे। सो अमित बोल रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वही रैंक देगा। ऐसे पेपर और जीएस पेपर 4, ये दोनों रैंक देंगे। तो इसलिए आप उसको बताएंगे। इट्स वेरी नाइस टू सी यू ऑल ऑफ यू। और स्प्रिया जी को थोड़ा सा आज विलंब हुआ, तो कोई बात नहीं है, वीडियो सुन लेंगे, और फिर टुमारो एट सेम टाइम 7:30 वी आर गोइंग टू मीट। सो थैंक यू, और कोशिश कीजिए एकेडमी में आने का, क्योंकि मंडे को तो सभी को हम बुलाएंगे, इसलिए कि मंडे को आपका आई कार्ड का काम हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो नाउ लेट अस डिपार्ट। और ये पूछ रहे हैं डिनर में क्या है, तो हमारे पास डिनर तो कुछ भी नहीं है। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन सच ए गुड नंबर। और पढ़ाई करना है, डिनर की चिंता नहीं करनी है। डिनर तो घर में जो मिलेगा उसी पर संतोष करना है, पढ़ाई करनी है। सो थैंक यू once again. Let me say good night to all of you, and bye bye.